Hello students, today we will start a new topic which will be comes under pharmacology. The drugs which will be used in central nervous system disorder. So in central nervous system drugs there will be many classification, बहुत सारे classifications आते हैं जिसमें हम it will be related to our brain. तो ब्रेन जो है इट विल बी कंट्रोल द पेन, इट विल बी कंट्रोल द साइकोलॉजी, इट विल बी कंट्रोल द मेंटल स्टेटस, it will be control many things in our body. So in this there will be many classification which will be comes under the central nervous system disorder. So first we will start from the anesthetic drugs. So anesthetics. Anesthetics means the practice of anesthesia include sedation a patient along with monitoring and maintaining patient's hemodynamic parameters like vital signs, etc. So anesthetic drugs, anesthesia which will be used, ये किस लिए यूज किया जाता है? It will be used to sedate the patient so that when we will perform any surgery or any operation, in that time patient which will be not feel that pain. So if the patient is, if we will not giving the anesthesia, so in that time the patient which will feel severe pain, and because of pain the patient which will be not undergoing for any surgery. So in this time we have to also maintaining the patient's hemodynamic parameters, and we have to also see the vital sign. Anesthesia can be broadly divided into following three types. First is the general anesthesia, second one is the local anesthesia, and third one is the topical anesthesia. So the general anesthesia, it will be again divided into two types. So in general anesthesia, the whole body which will be anesthetized. So in this general anesthesia, it will be divided into two types. First one is the inhalation anesthetics, and second one is the intravenous anesthetic. Inhalation in anesthetics means it will be volatile liquids or gases vaporized in oxygen and given by inhalation. Means inhalation is थ्रू द इनहेलेशन और इनहेल, मतलब पेशेंट थ्रू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है, और पेशेंट जैसे जैसे इनहेल करता जाता है उसको विथ ऑक्सीजन, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, पेशेंट का जो बॉडी है वो एनेस्थेटाइज्ड होने लगता है. देन नेक्स्ट इज द इंट्रावीनस एनेस्थेटिक. इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स, इन दिस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन गिवन बाय इंजेक्शन. ये जो सोल्यूशन है वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, एंड इट विल बी गिवन थ्रू द इंट्रावीनस. Then next is the local anesthetic. Local anesthetic means it used to interrupt pain impulses transmitted from peripheral nerve by causing temporary loss of sensation in limited body area. For example, if any means if the patient is having any infection or any means swelling, so in that time if the patient is having any means pus collection in particular area or in leg or in foot, so in that time we have to not perform the this surgery. So in that time incision and drainage, IND surgery, IND procedure which will be performed. So in this IND procedure we will not giving the general anesthesia, means होल बॉडी को एनेस्थेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है. तो इस कंडीशन में जो डॉक्टर्स होते हैं या जो सर्जन्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, दे विल बी यूजिंग द लोकल एनेस्थीसिया. सो इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे उनको कट करना है, इंसिजन देना है, ड्रेन करना है, सिर्फ उसी एरिया को वो क्या करते हैं, मतलब एनेस्थेटाइज करते हैं. तो कुछ समय के लिए टेम्पररी वो एरिया जो है उसका जो सेंसेशन है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. सो हाउ इट विल बी गिवन, इट विल बी गिवन मस्ट बी इंजेक्टेड टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया. इंजेक्शन के थ्रू उसी एरिया में जितने एरिया को एनेस्थेटाइज करना है उतने ही एरिया को क्या किया जाता है, उतने ही एरिया में इंजेक्शन दिया जाता है. देन नेक्स्ट इज द टॉपिकल एनेस्थेटिक. टॉपिकल एनेस्थेटिक मीन्स टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ लिमिटेड बॉडी एरिया. इसमें भी लिमिटेड बॉडी एरिया में दिया जाता है, बट इट इज टॉपिकली मीन्स अप्लाइड डायरेक्टली. इसमें जैसे ऑइंटमेंट जैसा कुछ होता है जिसको डायरेक्टली स्किन में अप्लाई किया जाता है या म्यूकस मेम्ब्रेन में. सो द एनेस्थेटिक एजेंट, it will be divided in three types. First is the general anesthesia, second one is the local
general anesthesia, and third one is the topical anesthesia. So we will deal one by one. The first is the general anesthesia. General anesthetics are the drug which produce reversible loss of all sensation and consciousness. Means this general anesthesia which are the drugs which produce reversible, means ये हमारे बॉडी का जो सेंसेशन है उसको क्या करता है, ये रिवर्सिबल होता है, एंड कॉन्शियसनेस मतलब कुछ समय के बाद जो पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो वापस आ जाएगा. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस. मतलब इस स्टेज में व्हेन वी विल गिव द जनरल एनेस्थीसिया टू द पेशेंट, इन दैट टाइम द पेशेंट विच विल बी अनकॉन्शियस. मतलब पेशेंट कैसा हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाता है, इन विच सब्जेक्ट इज नॉट अराउजेबल बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई. मतलब जो पेशेंट है या जो सब्जेक्ट है, जो क्लाइंट है, वो क्या नहीं कर पाएगा, इट इज नॉट अराउजेबल. पेशेंट हम उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो भी देंगे, पिंच कर रहे हैं, उठा रहे हैं, मीन्स वर्बली कुछ बात कर रहे हैं, तो भी पेशेंट क्या नहीं होगा, वो नहीं जागता है. क्यों नहीं जागता है और कब तक नहीं जागता है, टिल द इफेक्ट ऑफ ड्रग. जब तक उसके बॉडी में वो ड्रग का इफेक्ट है तब तक उसके बॉडी में अराउजल नहीं होता. मतलब द पेशेंट विच विल बी नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. देन व्हाट आर द पर्पस. सो क्या पर्पस है इसका, मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस. पेशेंट को अनकॉन्शियस करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, वी विल परफॉर्म द सर्जरी विच विल बी वेरी पेनफुल or which will be major surgeries. Then analgesia provide relief from pain during surgery. मैंने पहले भी बोला हम क्यों analgesia यूज करते हैं, क्योंकि during the time of surgery जब हम बॉडी के किसी पार्ट को कट करते हैं, ओपन करते हैं, so in that time the patient which will be having severe pain, तो वो पेन से रिलीफ करने के लिए we will give the analgesia which may extend to post operative period. I mean even cause amnesia. मतलब पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, मतलब जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, मतलब ऐसा नहीं है कि पेन पेशेंट को नहीं होगा, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड सर्जरी के बाद जैसे जैसे एनाल्जेसिक ड्रग का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. इन दैट टाइम द पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ पेन. Then relax skeletal muscles. जो skeletal muscles है वो क्या हो जाते हैं, when we will give the anesthesia, and that time the skeletal muscles which will be relaxed. Then next is inhalation. We have already discussed that this general anesthesia, it will be divided into two types. The first is the inhalation, second one is the intravenous. So first is the inhalation. So in inhalation, halogenated hydrocarbons, इसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं, दैट विल बी हेलोथेन हो गया, इन्फ्लोरेंस हो गया, आइसोफ्लोरेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. और नॉन हेलोजेनेटेड ड्रग्स विच विल बी यूज्ड, so that will be ether and cyclopropane. Then next is the intravenous. So in intravenous barbiturates, in barbiturates there will be thiopental, then methotrexate and propofol, then althazine, ketamine, then benzodiazepines. In benzodiazepine, the drugs which will be comes under that will be flunitrazepam or diazepam. Then next is the ethyl alcohol. Then we will discuss about the inhalation anesthetic agent. So in inhalation anesthetic agent, there are volatile liquid or gases that are vaporized. So ये liquid होता है, मीन्स इट विल बी प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म और इट विल बी वेपोराइज्ड इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से इसके वेपर्स निकलते हैं एंड व्हेन द पेशेंट विच विल बी इनहेल्ड, सो इट विल बी प्रोड्यूस्ड, इट एक्ट एज अ anesthesia. So these agents could be administered by three methods. इसको three methods से administer किया जाता है. First is the open method, second one is the semi open method, and third one is the closed method. So first one is the open method. Open method means the agent is poured on gauze sheet and patient is allowed to inhale it by keeping to the nose of the patient. Open method में हम क्या करेंगे, गॉस पीस में जो लिक्विड है उसको डाल देते हैं और पेशेंट के नोज के पास ले जाएंगे. सो द पेशेंट विच विल बी अलाउ टू इनहेल, उसको इनहेल करेगा by keeping it
टू द नोज, कुछ समय के लिए वो अपने नोज के पास में रखेगा. सो आफ्टर दैट द व्हेन द एनेस्थेटिक इफेक्ट विच विल बी स्टार्टेड, जैसे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट शुरू होने लगता है, पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है. देन सेमी ओपन मेथड. सो इन सेमी ओपन मेथड, इन दिस अ मास्क इज यूज्ड. मास्क यूज किया जाता है. द एजेंट इज पुट ऑन इट एंड इज अप्लाइड ओवर नोज from patient nose for lash. Means in this we will use a mask. Means it is a semi open method. So in this semi open method, mask which will be used, the agent is put on it and is applied over patient nose. मतलब मास्क में ये जो भी हम यूज कर रहे हैं एनेस्थीसिया, उसको लगा दिया जाता है एंड इट विल बी अप्लाइड ओवर पेशेंट नोज फॉर इनहेलेशन. और पेशेंट उसको क्या करता रहता है, इनहेल करता रहता है. तो जैसे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट होने लगता है, so that the patient's conscious level which will be slowly decreased. The next is the closed method. So in closed method, the agent is administered through a special machine. इसमें क्या यूज किया जाता है, in this the machine which will be used and the patient is allowed to inhale and exhale through the machine by endotracheal tube. अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, we will use the ET tube. endotracheal tube जो है वो लगाया जाता है पेशेंट को, एंड विद द हेल्प ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब द पेशेंट विच विल बी इनहेल और एक्सेल. सो विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन the agent which will be goes inside to the patient's body, and after that slowly the effect of the anesthesia which will be shown in the patient's body. Then next is the inhalation anesthesia agent are of two types. There will be two types. First is the halogenated hydrocarbons. In this the halogens which will be comes. So the indication. So in indication मतलब हम कौन कौन से पेशेंट को हम दे मीन्स इसका क्या इंडिकेशन है. सो एनेस्थेटिक एजेंट, ये क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट है. इट कंट्रोल्स द कन्वल्शन. कन्वल्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. कन्वल्शन मीन्स व्हेन द इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी. मीन्स अगर बॉडी में जब जर की मूवमेंट होने लगता है एंड इट विल बी नॉट कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, सो इट इज कॉल्ड एज अ कन्वर्शन. एंड इट विल बी मेजर्स कोरोनरी एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो. कोरोनरी और सेरिब्रल ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए इट विल बी यूज्ड. Then next is the intravenous agent. So in this intravenous agent, thiopentin, the indication of this thiopentin, that will be general anesthesia और anticonvulsant. What are the advantages? इसके advantages क्या है? It will be rapid induction and immerse. Post operative complication are less. मतलब इसमें post operative operation surgery के बाद the complications will be very less and recovery from anesthesia is fast. मतलब एनेस्थीसिया के बाद जो रिकवरी है वो क्या होती है, फास्ट होती है. देन नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस. इन डिसएडवांटेजेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, apnea and laryngospasm. Then hypotension can occur क्योंकि sometimes the patient is because of this intravenous agent the patient is having respiratory depression. patient को respiratory depression होने का chances है. then apnea हो सकता है. then laryngospasm हो सकता है. then hypotension can also occur. then propofol, the indication it will be induction and maintenance. means इसमें इंडक्शन और मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है. गुड फॉर शॉर्ट प्रोसीजर, जो सर्जरी कुछ समय के लिए है, 2 hours 3 hours के लिए, इट विल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज. then next is the local anesthetics. Local anesthetics, the definition of this local anesthetics, drugs which block nerve conduction in the regional area without causing loss of consciousness are called local anesthetics. मैंने पहले बोला कि जैसे ही हम इन लोकल एनेस्थीसिया वी विल means lost the sensation in that particular area.
So the drugs which will be used to block the nerve conduction in the regional areas, मतलब इसमें the patient is not losing their consciousness, patient का conscious level loss नहीं होता, but it will be block the nerve conduction. जो nerve conduction है उसको ये क्या कर देता है, block कर देता है, so that the patient which will be not feel the pain in that particular area. At the cellular level they have some action as general anesthesia. Then what are the mechanism of action? So permeability of the nerve membrane to sodium ions which prevent depolarization also, and it will be conductance is reduced, means it will be also potassium conductance is reduced. This is a membrane stabilizing effect and is also seen with drug like antihistaminics and anti-arrhythmetics and the beta blockers. It may block nerve impulses at the point of contact in all kind of nerve. So you all know about the means iron in our body and in our brain, how it will be function. It will be function with the help of the ions, cations or anions. So जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। सो परमेबिलिटी ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन टू सोडियम आयंस, सोडियम आयंस जो है जो क्या प्रिवेंट करता है, विच विल बी प्रिवेंट द डिपोलराइजेशन एंड इट विल बी ऑल्सो पोटेशियम कंडेंसेंस इज रिड्यूस। ये पोटेशियम के कंडेंस को रिड्यूस करता है। दिस इज मेम्ब्रेन, ये क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर विच विल बी इफेक्ट एंड इज ऑल्सो सीन विद ड्रग। मतलब ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, मतलब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है एंड इज ऑल्सो सीन विद ड्रग लाइक एंटी हिस्टामिनिक्स एंड एंटी एरिथमेटिक एंड इट इज अ बीटा ब्लॉकर। मतलब ये क्या करता है, बीटा ब्लॉकर को, मतलब बीटा ब्लॉकर्स को ये क्या करता है, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट जो है ये शो करता है। इट में ब्लॉक नर्व, और ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको भी क्या करता है, ब्लॉक करता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन ऑल काइंड ऑफ नर्व्स। Then the classification. So in this you will see the classification of this general anesthesia. It will be amides, then benzoic and benzoic acid esters and para-amino benzoic esters. So in this amides the lignocaine, prilocaine and mepivacaine and bupivacaine. Then in benzoic acid ester, cocaine and piperacine. Then para-amino benzoic acid, that will be procaine, then amethocane and benzocaine. In contrast to general anesthesia, cardiac output and स्ट्रोक वॉल्यूम आर नॉट मच अल्टर्ड। इसमें जो कार्डियक आउटपुट है और हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, इट विल बी नॉट मच अल्टर्ड। इसमें ज्यादा अल्ट्रेशंस जो है वो नहीं आते हैं। नो चेंज इन प्लाज्मा कॉर्टिसोल एंड और एपिनेफ्रिन लेवल्स, क्योंकि ये इट इज अ लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया है जिसके कारण से कार्डियक आउटपुट वगैरह को ये ज्यादा क्या नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता है। बट इन जनरल एनेस्थीसिया वगैरह हो गया, उसमें ये ज्यादा अफेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। लो इंसिडेंसेस ऑफ मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी, इसमें ज्यादा मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी के रेट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। ईजियर एम्बुलेशन, द एम्बुलेशन इज वेरी इजी, देयर इज लेस रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एनालिसिस। मतलब इसमें पोस्ट ऑपरेटिव, जैसे इन जनरल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इन सब में क्या है, मतलब आफ्टर सर्जरी के बाद क्या देना होता है, एनालिसिस देने की जरूरत पड़ती है। बट इन दिस इफ वी विल परफॉर्म एनी cut or any small incision, so we will use the local anesthesia. So in that time it will be not required for any analgesics after small post-operative surgeries. Then properties of local anesthesia, क्या क्या properties होते हैं? So first is the non-irritative,
ये इरिटेशन नहीं होता है। लो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, इसमें जो टॉक्सिसिटी होती है मतलब जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिसिटी डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं वो इट विल बी लो। देन शुड बी इफेक्टिव वेदर इंजेक्टेड और अप्लाइड टॉपिकली। ये when we will injected or applied topically, it will be effective. Short induction time, it will be for short duration. Then use of adrenal, one is to um, 1 lakh, or phenylephrine decreases the rate of absorption of local anesthetic agent, leading to its prolonged effect and also reduce its systemic toxicity. मतलब इसके जो prolonged effect है उसको ये क्या करता है, it will be reduced and also it will be reduce the systemic toxicity. जो systems में जो toxicity होने के chances रहते हैं उसको भी ये क्या करता है, reduce करता है. Then what are the side effects? So in side effects, there are basically due to systemic absorption, sometimes the patient is having the problem of tremors. जो tremors है handshake होना वो हो सकता है. The patient is having the problem of convulsion, conduction, and force of contraction are reduced. Means the contraction which will be reduced. Then arterial dilation can occur. The patient is also having the problem of arterial dilation. Then next is the hypersensitivity. Hypersensitivity, it will be methylaminoglobinemia. The patient is having the problem of hypersensitivity of methylaminoglobinemia. Then what are the therapeutic uses? किस में use किया जाता है? What are the therapeutic uses? So in therapeutic uses, we will see that surface anesthesia. So in surface anesthesia, it is used for mucous membrane of upper respiratory or the genitourinary tract. मतलब ये mucous membrane और upper respiratory या genito tract के लिए it will be used. And कौन से drugs use किए जाते हैं? It will be used lignocaine, cocaine and tetracaine are used. Cocaine by virtue of the vasoconstrictive action, means it will be constrict the blood vessels and it will be improve the surgical visualization. Then topical anesthesia. In topical anesthesia, in the form of cream, it is effective in relieving the annular genital pruritus, hexylcane and pramoxine are used. Then ophthalmic anesthesia, it will be used where tonometry is to be performed or a corneal ulcer is very painful, and infiltration anesthesia, that is injected of local anesthesia used for minor surgical and dental procedures, and adrenaline containing solutions are not injected to the tissues supplied by end arteries as it may cause gangrene. So in this we will see there are some therapeutic uses which will be used as a surface anesthesia, topical anesthesia, ophthalmic anesthesia and infiltration anesthesia. The next is the analgesics and antipyretic. Analgesics means the drugs which will be used to reduces the pain, and antipyretics it will be used for reduces or relief from fever. So analgesics and antipyretics are the drugs used to relieve the body ache and to reduce the fever. Analgesics are of two types. There will be two types. The first one is the non-opioids analgesics and opioids analgesics. So non-opioid analgesics, there are the drug which will not depress the central nervous system. Non-opioid analgesics means क्या होता है? It will be not depress the central nervous system. ये central nervous system को depress नहीं करता. Do not produce physical dependence and have no abuse liability and are called non-narcotics, non-opioid drugs. इसमें जो है it will be also called as a non-narcotics or non-opioid drugs. मतलब ये क्या है? CNS को डिप्रेस नहीं करता है, that is called as a non-opioid. It is also called as a non-narcotic analgesics. These drugs have
Analgesia, antipyretic and anti-inflammatory properties, non-steroidal anti-inflammatory drugs by virtue to antagonize the prostaglandin synthesis. मतलब ये क्या करता है? It will be virtue to antagonist or antagonize the prostaglandin synthesis. Then classification. So in classification, the salicylates in this acetyl salicylic acid, then para aminophenol derivatives. In this, the drugs which will be comes under paracetamol or phenacetin, then parazolone derivatives. In this, oxyphenbutazone and indole derivatives, indomethacin or Sulindac, then propionic acid derivatives, ibuprofen, ketoprofen, naproxen, then anthranylic acid derivatives, that will be mefenamic and flufenamic acid, then oxycame's derivatives, pyroxycame, then ethanoic acid, that will be comes under diclofenac. So salicylates or aspirin, the action is एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी. मतलब एस्पिरिन के क्या क्या एक्शंस है? तो इट एक्ट एज अ एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी. एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स इट विल बी रिड्यूसेस द इन्फ्लामेशन. It useful in headache, rheumatic and muscular pain which will be arising from integumental structures, not effective in acute sorry, it will be not effective in acute visceral pain. The peripheral analgesic action depends on reducing the production of prostaglandin present in inflammatory process. There is also has anti-bradykinin action, which is reflects as elevation of pain threshold. So the other postulated mechanism for anti-inflammatory action, it will be interference with oxidative phosphorylation, interference with migration of leukocytes. Then in antipyretic, the salicylates have antipyretic action. Antipyretic means it will be reduces the body temperature, and it will be due to inhibition of synthesis and release of prostaglandin, which will be present in the hypothalamus through the ये सबको पता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हमने कि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है? इट विल बी कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उसको ये क्या करता है? रिलीज करता है, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन हाइपोथैलेमस. देन नेक्स्ट इज द anti-rheumatics. So in anti-rheumatics, the pain and fever are reduced. It is suggested the salicylates stimulate endogenous cortisol. They also prevent release of lysosomal enzymes which destroy cartilage of rheumatic joints. Then uses, क्या क्या uses हैं? So first is the analgesia. Therapeutically, it will be uses cases of myalgia or neuralgia, or patient is having the problem of toothache, dysmenorrhea, abdominal pain during the time of menses, and backache or premenstrual tension. Then antipyretic in acute rheumatic fever, dose is 5 to 8 gram per day in rheumatic arthritis. Then gout due to uricoriosic action, aspirin is used in doses of more than 3 gram per day. Then next is toxicity. So in toxicity, salicylism characterized by tinnitus and dizziness, hemorrhage from gut, wheezing, पेशेंट को wheezing हो सकता है, hypersensitivity reactions हो सकते हैं, hepatotoxicity, spleen जो है वो उसमें hepatotoxicity होने का chances रहता है. Then drug interaction.
potentiates the effect of oral hypoglycemic agent and oral anticoagulants. Then gastric irritation potentiates when used with alcohol. Then next is the paracetamol. It is major metabolite of phenacetin, has an antipyretic effect. It has no anti-inflammatory और anti-rheumatic activity. जो पैरासीटामॉल है ये मेजर मेटाबोलाइट फेनासिटिन है and it act as an antipyretic effect. It has no anti-inflammatory और anti-rheumatic activity. इसमें कोई भी anti-inflammatory या anti-rheumatic activity नहीं होती. It has no effect on platelets. ये कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता प्लेटलेट में. द एंटीपायरेटिक इफेक्ट इज ड्यू टू एक्शन ऑन सेंट्रल प्रोस्टाग्लैंडिन. जो एंटीपायरेटिक इफेक्ट है इस ये क्यों होता है? इट विल बी ड्यू टू एक्शन ऑन, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करता है? अफेक्ट करता है. देयर इज diurnal variations in absorption. Half life of drug is 2 hours. There is less gastric irritation than aspirin. The drug abuse leads to liver damage. Agar if the patient is having excessive use of paracetamol, so in that the patient means this drug which will be affect the liver damage, particularly in glutathione deficient individuals. Toxicity treated by giving an acetylcysteine 150 mg per kg IV. Adverse effect of paracetamol, that will be acute hepatotoxicity. Symptoms of acute hepatotoxicity from paracetamol are the patient is complaining that the patient is having the problem of abdominal pain, diaphoresis, hepatic failure, coma and death. Then the contraindications. So in contraindication, liver dysfunction or failure, patient taking warfarin and coumadin. Tylenol slows coumadin activity, thus increase the level of coumadin. It will increase the risk of bleeding. So these are the contraindication. In if the patient is having the problem of liver dysfunction or failure, so in that time we will not use this drug. Then nursing interventions for paracetamol, we have to check the INR for patient taking coumadin. Then observe for sign of bleeding, fatigue, bruising or hematuria. Then monitor liver function test. Antidote for paracetamol is acetylcysteine, mucomist, which should be kept in stock. Then phenylbutazone, it will be powerful anti-inflammatory agent. The initial dose is 400 mg per day orally, and therefore use in conditions as acute gout, ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, superficial thrombophlebitis, and in non-effective inflammatory eye conditions such as scleritis, uveitis. Then side effects are peptic ulceration, agranulocytes and serum sickness. Then drug interaction, as drug is highly protein bound, so it displaces oral anticoagulants, so oral hypoglycemic and sulfonamides. Then the next drug, that is indomethacin. It is uses are similar to phenylbutazone. So in this phenylbutazone, it has analgesic properties. So in this analgesic properties, it will be independent of its anti-inflammatory action. The drug undergoes extensive hepatic metabolism, and it will be undergoes enterohepatic circulation. It is useful in Hodgkin's disease. ये generally Hodgkin's disease में use किया जाता है where fever is refractory to other agents. Then what are the side effects? Such side effects which will be headache, hallucinations or hypersensitivity. Then opioid analgesics. The opioid analgesics, it is also called narcotic analgesic or opioid agonist. These oxygenated from the opium plant opioid have pain relieving
anti-tussive, and also anti-diarrheal effect. So in this opium, the dark brown resinous material obtained from poppy, that is Papaver somniferum capsule. So in this, the drugs which will be comes under this opioid analgesic, that is morphine. So morphine is an opioid used to relieve moderate to severe pain during postoperative period. Means these opioid analgesics which will be used for the patient who are undergoing any surgery, or if the patient is having severe pain or myocardial infarction or cancerous type of pain, etc. So it is an alkaloid obtained from opium that bind the opioid receptor in CNS. ये क्या करता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं उसको क्या कर देता है, bind कर देता है, so that the patient's pain which will be reduced. Uses to relieve severe pain resulting from acute myocardial infarction, cancer, dyspnea from pulmonary edema. As a pre-operative medications, it also causes cough suppression to treat intractable profuse diarrhea. Then doses per oral 10 to 20 mg, then IM 5 to 15 mg, IV 4 to 10 mg. Then side effects and adverse reaction, that will be anorexia, loss of appetite, nausea, vomiting, drowsiness, constipation, sedation, पेशेंट को नींद आती है, डिजीनेस, चक्कर आना, गिडीनेस, confusion, urinary retention, then pruritus, bradycardia, the pulse rate which will be decreased, then blurred vision, धुंधला दिखाई देना, hypotension, seizures, then respiratory depression and increased ICP, intracranial pressure. Then what are the contraindications? कौन-कौन से patient को हम नहीं दे सकते? When the patient is having the problem of asthma with the respiratory depression, increased ICP, when the intracranial pressure if it will be increased in the patient. Then next is the shock, respiratory, renal or hepatic diseases. When the patient is having the problem of respiratory, renal or hepatic diseases, in that time we will not give the morphine. Then naloxone is used as an antidote to opioid. हर ड्रग्स का एक एंटीडोट होता है, अगर उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है, उसमें पेशेंट के बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है, so as an antidote we will use the naloxone. Then methadone, it is used to relieve pain and detoxifications. So the dose is 5 to 40 mg per day. Side effects, that will be orthostatic hypotension, constipation, dizziness, vomiting, pruritus, urinary retention, dry mouth and anorexia. Then what are the contraindication? The contraindication, that will be hypersensitivity, diarrhea due to poisoning. Then next drug that is used in this, that is used is meperidine. Meperidine has shorter duration of action and does not have anti-tussive properties. So the uses, that will be analgesia, preferred in renal impairment and pregnancy. The doses, that will be 50 to 150 mg, and the side effect, that is hypotension, dizziness, nausea, vomiting, confusion, insomnia, dry mouth and pruritus. Then the contraindications, there will be severe liver dysfunction. Means if the patient is having severe liver dysfunction, so in that type of patient we will not give this drug. Sickle cell diseases, history of seizures, then severe coronary artery disease and cardiac dysarrhythmias. So these all about the drugs which will be used in central nervous system disorders. So in today's class we have discussed about anesthetics. So in anesthetics it will be divided in three types. First is the this general anesthesia, local anesthesia, and this topical anesthesia. Then after that we have discussed about analgesics. In analgesics there will be two types in this
opioid or non-opioid drugs, and in non-opioid it will be again classified in various drugs. So these are all about the um, central nervous system drug disorders which will be used. So thank you. If anyone having any doubts, so ask me, and we will continue this topic in next class, because there is many classification which will be present in this topic. So